Yes, good afternoon, everyone, and a very warm welcome to all. It gives me immense pleasure to welcome you all to this session of Commerce PhD coursework program. We extend a warm and respectful welcome to Dr. Vineet J. Verma, sir, Assistant Professor in the Department of Commerce and Management, Dr. Kabir Narsimha Mehta University, Junagadh, Gujarat. Dr. Verma holds a PhD along with MCom, MBA, and a diploma in banking and has been dedicated to teaching and research for the past 13 years. He began his academic journey at the Faculty of Commerce, Maharaja Sayajirao University of Baroda, and has been serving at BKNMU since 2018. With strong expertise in banking and finance, Sir also brings valuable industry exposure as he has previously worked as a branch manager at HDFC Bank. His doctoral research focuses on central bank digital currency, popularly known as e-rupee, and his key research interests include digital banking, digital money, and cryptocurrency. Currently, four research scholars are pursuing their PhD under his guidance. Dr. Verma has published several research articles in reputed journals and books and presented papers in various conferences, seminars, and have actively contributed as speaker in FDP and training programs. He has also received patent in his research and has won the Best Research Paper Award twice. We are confident that today's session will be highly enriching and research driven for all our scholars. On the behalf of the organizing committee and our participants, I extend a heartfelt welcome to you, sir. Now, may I request you to start the session? Thank you, Deepal. Thank you so much. Good evening, one and all. It's my pleasure that I have been given a chance to speak in front of you in this research coursework. Uh, my today's lecture would be on testing the hypothesis. It's an important topic in research methodology. I'm thankful to whole committee or organizer, starting from PhD coordinator and our departmental head Dodia sir and all the person who are involved in this noble course of action. I also extend my thanks to our honorable Vice Chancellor sir for providing me this opportunity. Friends, as PhD students in commerce and management, you all are doing a research to find the truth from the data, basically. Research is not only about collecting information, but it is about taking correct decision based on fact, figures, and evidence. Basically, it is exactly where hypothesis testing become very useful. In simple words, if we can quote, hypothesis is an assumption, or we can say a statement that we want to test. For example, we may say advertisement increases sales, okay, or training improves employees' performance, or we can say customer satisfaction affect the brand loyalty. But in research, we cannot depend only on feeling or opinions. Correct. We must prove such statement using data, statistical methods, etc. The process of checking whether our statement is true or not, uh, using the data called hypothesis testing. That means we need to prove uh, based on data, based on tests that either it is true or not. Hypothesis testing help us to answer question like, is this result real or just by a chance? Correct. Or can we trust on our conclusion, or is the relationship meaningful or only a coincidence? In commerce and management research, hypothesis testing is used everywhere in marketing, finance, HR, accounting, banking, consumer behavior, economics. Correct. For example, a company wants to know whether a new pricing strategy really increase the profit. A bank want to know whether the consumer price quality really affect the consumer retention or not. A college wants to know whether a new teaching method improve the student performance or not. In all these cases, hypothesis testing gives a significance importance or scientific and reliable answers. And during your PhD journey, you will use
tools like t-test, z-test, chi-square test, ANOVA, p-value, etc. These may look difficult in the beginning, but I want to tell you one thing very clearly. The logic of hypothesis testing is very simple. It is just a systematic way of taking a decision based on evidence. Fine. Today's lecture will help you to understand the basic concept of hypothesis testing, learning how to frame and alternate hypothesis, know when and which test to be used. For example, if we been given the chance to talk about this, because our session would last only for 1 hour. Most importantly, how to interpret the result correctly. All these things we'll discuss if you get the time within this 2 hour, 1 hour. Sorry. I strongly believe that this session will make you research work more scientific and more confidence and meaningful. Correct. And let's talk about testing of hypothesis, where it begins from. Correct. It basically begins from the objective. Which objective you have choose, or how many objective you have choose to prove the objective, or to explain your objective, whether that objective has been fulfilled or not in your PhD journey. You need to convert, or you need to test your objective into the hypothesis. For example, you have chosen any topic, and suppose you come up with 4 to 5 objectives, and for each objective you need to prove that whether your objective has been uh, proven or taken well in your research or not. For that you need to you need to derive some hypothesis from that, and you have to prove your objective through the hypothesis. Correct. So suppose you have a 5 objective, then you need to prepare hypothesis accordingly. It is not necessary that you have 5 objectives, so you need to prepare 5 hypotheses. It is not so. Maybe chances that one objective may have 4 to 5 to 6 to 7 to 8 hypotheses to prove one objective. Correct. So according to the objective, how much hypothesis is required, you need to prepare the hypothesis, and uh, you have to perform the hypothesis using some statistical tools. And once you apply the statistical tool, you will get the answer whether this hypothesis is accepted or not accepted, है ना? Rejected or not rejected. Correct. According to, based on rejection or acceptance, you will say that this objective has been fulfilled or not in your research. And finally, for uh, testing your hypothesis, you need to accept, or you need to apply some test that depends upon your data collection, your depends upon your data size, or we can say simply your research sample, or how is your research methodology. Based on that you can say whether which test is being applicable. This is not the topic for today's discussion. Today's discussion is hypothesis testing per se, or we can say particularly. Correct. Let's move on into the topic. Okay, let's introduce the topic. Primarily, the objective is statistical analysis to use the data from a sample, correct, to make inference about the population from which the sample was drawn, particularly. Okay, so for example, the main goal of statistical analysis is to take the data from a small group, we can say sample. Okay, so from where we will get this sample and we use it to make a small guess about the whole group. Correct. We can say that we have a large population, and out of this large population we select a small sample to interpret our assumptions. That I will conclude that, for example, researcher wants to know the average monthly spending of all the college student, for example, in Rajkot, on quick commerce app like Zomato or Blinkit, we can say.
how much monthly students spend on Blinkit, Zomato, Zepto, etc. Since they cannot interview million of students who are doing study in Rajkot. So what we'll do, we'll survey only 500 students or 1000 students. And the data from these 500, we can say sample, correct? 500 sample is used to estimate spending of all the student in Rajkot. So what we will say about average monthly spending on this quick commerce will that will be based on this 500 or 10,000 student who are using this app. Correct. So whatever will lastly conclude, that will reflect of whole population, that we are talking about whole population, that student of Rajkot is averagely monthly spending on this quick app is this much. Correct. So we are not going to study whole persons or whole student who are studying in Rajkot. What we'll do, we'll take the sample from the population. Population is large, sample is among them, and we'll take that sample and we'll talk about whether they are using how much they are spending on quick apps. Correct. So sample is a small portion from the population mean. Huh? Moreover, let's move further. So here we talked about this. What is hypothesis testing? So what is hypothesis testing? That is a educated prediction that can be tested. Educated prediction. Correct. It is not a fumbling. It is not that we have just derived by our own. Correct. It's a well calculated, well tested prediction that we are going to test. Hypothesis is a proposed explanation from a phenomenon. Okay, for example, implementing a 4-day work week in an Indian IT firm will increase the employee productivity. That is what we are talking nowadays about. Correct. So for example, uh, 4 to 5 days a week will increase the productivity. That is what we are thinking of. So this prediction can be tested by comparing the data before and after. Correct. So by that way, we'll do the test. Okay. And moreover, hypothesis is used to define the relationship between two variables. Here, before and after, for example, or we can say two things we are having, this better or that better, two companies, this company is better or that company is better. Correct. Supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. That means we are supposing or we are guessing from a sample population about the whole population here. Moving further, testing of hypothesis. Testing of hypothesis, you must have the basic understanding about it. So testing of hypothesis, basically in hypothesis testing, we decide whether to accept or reject a particular value of set. That we are going to say whether we are going to accept it or we are rejecting it of particular value of the parameter of those several parameters. It is seen that although the exact value of the parameter may be unknown, there is often some idea about the true value. Data collected from the sample help us to reject or accept the hypothesis. In other words, dealing with the proper problem of hypothesis, we try to arrive at right conclusion, we can say. In nutshell, what we are doing, we are just decide whether to accept or reject a specific value of population parameter based on hypothesis. Correct. For example, average salary of female manager in Mumbai is equal to male manager. This is one short of hypothesis. Now, what we are going, either we are going to accept it or reject it. Correct. For example, average return on Nifty 50 stock is 12%. So whether we are going to accept it or reject it. So hypothesis testing, what happens in hypothesis testing? Either we are accepting it or we are rejecting it. Correct.
So the test of statistical hypothesis is two action basically. Decision problem after experiment sample value being obtained. Two actions means either we are accepting it or we are rejecting it. Correct? So whatever statement we are framing, we need to either accept or reject. Correct? Now, statistical hypothesis, if hypothesis stated in terms of population parameters such as mean variation, the hypothesis is called statistical hypothesis. Correct? And another is parametric hypothesis. What is parametric hypothesis? For example, a statistical hypothesis which refers in the value of unknown parameter or probability distribution, who is known as called parametric hypothesis, basically. So for example, if you talk about parametric hypothesis stating the average return on Nifty 50 stock, that is 12%, if we are quoting it in an example. So this is what we call a parametric hypothesis, correct? And average salary of female is less better than the male salary among the working class in Ahmedabad. That is a statistical hypothesis. So there are few types of hypothesis, and it is not necessary that you specify the type of hypothesis in your research. It is not necessary. Correct? You just need to frame the hypothesis, and that hypothesis either will reject or will not reject. Correct? Either that will going to reject or it will not. Simple is that. Is it okay? So either it will reject or it will not reject. Move over. Now talk about this null hypothesis. Okay. So if you talk about null hypothesis, so null hypothesis is a stating statement. Basically, null hypothesis is stating statement that assume that there is no change, no effect, okay, or no difference. Null hypothesis is what? Null hypothesis means whatever we are trying to check, there is no change, no effect, or no differences. It is the statement of quality, meaning we assume a population parameter like means or average is equal or specific claim value. For in research, we always test null hypothesis directly to see if we should reject it or fail to reject it. Correct? So here is two things: either we are rejecting it or we are failing to reject it. Correct? For example, if we talk about, for example, say suppose there is any drug. For example, a company came up with the, for example, paracetamol. Then company came up with paracetamol pro. Correct? So company is claiming that paracetamol pro is uh, more effective than paracetamol. Correct? So what company is doing? Company is stating that paracetamol pro is more effective. So what is our null hypothesis? That there is no difference among paracetamol and paracetamol pro. There is no difference. That would be our null hypothesis. What we need to prove is we need to apply the test and see whether there is a difference or not. If there is a difference, then what we are doing, we are rejecting the null hypothesis. Correct? So what we need to do is whether we need to just prove that whether to reject or whether we are failed to reject. So one thing I would like to keep your focus on: wherever you are writing null hypothesis, correct, it should mostly it should be start with there is no difference, there is no change, there is no significance difference. So like these words you need to start your null hypothesis. Correct? There is no significant difference between, likewise, or there is no change, likewise, there is no effect, likewise. So you have to write null hypothesis in negative format.
right? There is no change, there is no effect, there is no difference. Likewise, you need to write. And how you write? Null hypothesis is always denoted as H0, HO, correct? So how it symbolized? It is denoted as HO. And in research, we always test null hypothesis. In research, we always test null hypothesis, not alternative hypothesis. What we need to test is only null hypothesis. If null hypothesis is rejected, that means automatically we are accepting alternate hypothesis. Correct? So what we need to write after doing the test of null hypothesis, we need to simply write, if null hypothesis is rejected, we have to write reject HO, reject HO, correct? Suppose if alternate hypothesis is accepted, correct? Oh, alternate hypothesis is failed and we have to accept the null hypothesis. What will write? Fail to reject null hypothesis. Accept null hypothesis, ऐसा नहीं लिखना है. What we need to write is fail to reject null hypothesis. So what we need to write? Two things. Reject null hypothesis or fail to reject null hypothesis. Correct? ऐसा नहीं लिखना है accept H1. ऐसा कई लोग लिखते हैं. We need not to write this way. Correct? And again on this, what is alternate hypothesis then? Correct. So alternate hypothesis is opposite of null hypothesis. Opposite of null hypothesis. It is a statement we believe might be true if null hypothesis is proven wrong. If you are conducting a study to prove a new claim, your claim should be worded as alternate hypothesis. Correct? So if you are doing this, you need to write whether your alternate hypothesis is accepted or not. So what you will write? If your alternate hypothesis is accepted, you need to write reject H0. Means you have to write reject H0. And if alternate hypothesis is got rejected, you need to write fail to reject H0. Likewise. Okay. So uh, let's move further. Okay. So this is an example. Mu5 means mean of population is 5, H0 is mean of population 5. Above all, statement of null hypothesis stating that popularly mean is equal to 5. For example, null hypothesis in parametric sense, it is mu5. Another example can be taken to explain. Suppose a doctor has compared the decrease in blood pressure when drug A and B both are used. Suppose A and B follow the distribution with population mean A and population mean B. Then H0 is population A is equal to, or we can say drug A is equal to drug B. That is a null hypothesis. Drug, for example, paracetamol A and paracetamol pro is, there is no difference, both are equal. That is our null hypothesis. There is no difference between paracetamol and paracetamol pro. Correct? So what we will write in null hypothesis? There is no significant difference between mu A means population, no, mean of population of drug A and mean of population of drug B. In parametric sense, how we'll write? We'll write H0 colon mu A is equal to mu B. Correct. That is a null hypothesis. Okay. So what is alternate hypothesis then? Alternate hypothesis is opposite of null hypothesis. Correct. So what could be the opposite of null hypothesis? That it can be anything. It can be not equal to, greater than, less than, anything it can be. Correct. So alternate hypothesis denoted by H1 or HA or H capital A, there is a statement that parameter has a value that shows of differ from null hypothesis. It is differ from symbolic. If you want to represent not equal to, greater than, less than, whatever you can write, fine. But it is not same as null hypothesis. That's all. Clear? So it is a statement we believe might be true if null hypothesis is proven wrong. If we are
concluding a study that prove a new claim you claim to be worded as alternate hypothesis. Symbolically, you can write H1. Basically, what we are accepting H1. How you need to write? बस आपको क्या करना है, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस में नो हटा देना है, बाकी सब ऐसे रखना है. करेक्ट. देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दैट इज अ नल हाइपोथेसिस, एंड अल्टरनेट देर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस. इस तरीके से आपको लिखना है. ओके, सो दैट इज अ अल्टरनेट हाइपोथेसिस. करेक्ट. और वो कुछ भी हो सकता है. इफ इट इज नॉट द नल हाइपोथेसिस which means equal to, there is no significance difference means both are same, then alternate hypothesis can be anything. Okay. So what in research, what we are testing, we are always testing null hypothesis. Simple. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको ड्रग का एग्जाम्पल दिया. ओके. सो ड्रग के एग्जाम्पल में से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल cigarette manufacturer claim that less than 1/8 means 12.5% of the adult population smoke is their brand. Suppose there is one cigarette company and they are claiming that 12.5% of adult population is using their cigarette. Correct. So what is their true what is their statement? Their statement is, they claim is exactly true. What they are supposing that 12.5% people are using their cigarette. Fine. Now what we need to do is we need to reject this claim. So हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे. हम बोलेंगे 12.5 नहीं कर रहे बस. Correct. The claim is exactly true. The proportion of smoker is equal to 12.5. So decision, if you reject null hypothesis, we conclude that manufacturer's claim is false. हम ऐसा बोलेंगे जो तुम बोल रहे हो गलत है. हम ये नहीं बोलेंगे कितना कर रहे हो. So हमारी रिसर्च क्या होगी? हमारी रिसर्च would be the claim 12.5% of adults are using their brand. This claim is false. Just we need to prove this, nothing else. Okay. So in research we need to reject null hypothesis. Our research is over. So for example, a researcher wants to check if men and women in a company earn the same average salary. This is the researcher wants to prove. So null hypothesis क्या होगा? The null hypothesis would be the wage of men and women are equal. मतलब हमको अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? There is no difference between the average wages of men and women in so and so company. That would be our null hypothesis. और उसका opposite alternate hypothesis हम क्या बनाएंगे? Alternate hypothesis बनाएंगे there is a difference. नो हटा देंगे बस, देयर इज अ डिफरेंस. ओके. तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि मैन एंड वुमेन आर नॉट अर्निंग इक्वली. वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो, मतलब वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है. करेक्ट. ओके. ये बात. So we while we are writing the null hypothesis, what we need to do is we need to identify the parameter, decide which popular parameter you need to test. मतलब आपको नक्की करना पड़ेगा what you want to test. दो चीजें, कौन सी दो चीजें जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो? तो basically if it is a what we can say primary data, then primary data में हम क्या करते हैं? डेमोग्राफी फैक्टर के साथ टेस्ट करते हैं. डेमोग्राफी फैक्टर के साथ टेस्ट करते हैं. तो मान लो कि क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड, बराबर. यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड, उसको आपको टेस्ट करना है वेदर पीपल आर अवेयर और नॉट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेस्ट इट विथ डिफरेंट डेमोग्राफिक पैरामीटर. फॉर एग्जांपल एजुकेशन. करेक्ट. तो आप क्या करोगे? एजुकेशन के साथ आप किसको टेस्ट करोगे? वेदर दे आर अवेयर ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड और नॉट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने क्वेश्चनर में कोई क्वेश्चन पूछा होगा कि आपको इसके बारे में कितना पता है, ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन पूछा होगा. उस क्वेश्चन को लेना है और यहाँ से किसको लेना है? एजुकेशन को लेना है. So what you need to do is you need to take the education from the demographic factor, and from another variable you need to take this awareness of credit card. और उसको आप क्या करोगे? काई स्क्वायर टेस्ट में रन करोगे. काई स्क्वायर टेस्ट में रन करने के बाद आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि एजुकेशन का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. दैट्स ऑल. आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है.
आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट डेमोग्राफिक फैक्टर लाइक एजुकेशन, कि एजुकेशन से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. जस्ट यू कम टू नो दिस वे. Correct? So what you need to do is you need to write in your null hypothesis that there is no significance relation or there is no difference. Likewise, you need to start your statement from this word. Correct? For example, consumer behavior, e-commerce, if you are writing, so there is no significant difference in average monthly spending of customer on Amazon and Flipkart. Likewise, for example, if you are writing average productivity scores of employee at Indian IT firm remain the same as before and after of software skill training program. Correct? So, and the average annual return of small cap mutual fund in India is equal to 12%. So anything you write, so what you need to write, you need to write this way. There is no significant difference or there is no difference. So likewise, you need to write in this that sense. Correct? Every time taken to process home loan at SBI is equal to time taken in HDFC. You want to check whether HDFC or we can say private bank is taking more time or nationalized bank is taking more time to pass a home loan. So what you need to write in your null hypothesis, there is no significant difference in time taken by a private bank and your nationalized bank. Correct? So you need to write this way. There is no significant. So what is the alternate hypothesis? There is a significance difference. So what you need to prove is you need to just prove that your null hypothesis is rejected or not. Correct? You need to prove that way. Okay, fine. Mm, okay. So type of alternate hypothesis, there are two type of hypothesis. One is one-sided alternate hypothesis, is another is two-sided alternate hypothesis. Correct? जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हो? वन टेल एंड टू टेल. Likewise, you are writing this way, one tail or two tail. Okay. So one tail is there is a one chance and there are two chances. Correct? So whether it is one tail or whether it is two tail, हम इसके ऊपर काफी अच्छे से बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं. तो वन टेल टू टेल क्या होता है? अगर आपका नल हाइपोथेसिस is mu is equal to mu zero, or we can say a is equal to b, we can say, or population mean is equal to population mean of another sample. तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा या तो ज्यादा या तो कम या तो नॉट इक्वल. सो व्हाट इज टू साइडेड? टू साइडेड मींस नॉट इक्वल. Correct? And one sided is either greater or not greater, or either lesser or greater, whatever. So that is called two sided. Fine. So for example, if you want to know that 5 ml of milk pouch contain exactly 5 ml of milk or not. Correct? So your null hypothesis is that packaging machine is inject exactly 500 ml of milk into the pouch. That is your null hypothesis. There is no significant difference among the machine dispenses the milk into the pouch or not. So that is your null hypothesis. What you need to prove is you need to prove that it is not correct. One thing. So it is one sided. टू साइडेड क्या होगा? मशीन पाउच में ज्यादा मिल्क इंजेक्ट करती है या कम मिल्क इंजेक्ट करती है. दैट इज कॉल्ड टू साइडेड. Correct? So either it is injecting more milk or less milk. That is, we can say two-sided. Fine. Now, not about forming your own claim hypothesis. If you are concluding a study, you want to use a hypothesis test to support your claim. That claim must be word so it become a alternate hypothesis. Means you need to give it a proper wording or proper formation of a sentence. Correct? So whatever you are writing in alternate hypothesis,
So which type of hypothesis, alternate hypothesis you want to prove? Either it is two tail test or one tail test. Okay. So basically क्या होता है, कॉमर्स वगैरह में तो हम बेसिकली हम क्या करते हैं कि वन टेल ही होता है हमारा, कहीं भी जा रहे होते हैं, बट टू टेल में बेसिकली यू हैव टू प्रूव वेदर इट इज ग्रेट और लेस. सो वट एवर योर ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रूव वेदर इट इज अ टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट. करेक्ट. टू टेल टेस्ट याद रखना, इट इज नॉन डायरेक्शनल, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है. करेक्ट. आइदर इट इज लेस और इट इज मोर, इट इज backward, it is forward, it is good, it is bad. Likewise two tell means no direction, and one tell is there is a direction. There is a direction. हम इसको समझते हैं धीरे धीरे करके क्या है. For example, two tell test is used when you are if you want to find out if there is any difference between groups. Fine. Two tell, just what you need to find out, there is a difference or not. That's it. कितना difference है, क्या difference है, that you don't want to find. You want to find is there any difference or not. But you don't know, or we can say you don't care if that difference is increase or decrease. हमको उससे कोई लेना देना नहीं है ना. What you need to do is you need to check it is different or not. You are looking for a chance, either the direction. So when to use, when your null alternate hypothesis use that not equal to sign, means if you are writing there is no difference in your null hypothesis. अगर आप null hypothesis को इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि there is no difference, करेक्ट, ऐसा लिखते हो आप कि there is no difference between फलाना फलाना, इस तरीके का आपका सेंटेंस है, तो समझ लेना वो क्या है, वो टू टेल टेस्ट है, नॉन डायरेक्शनल टेस्ट है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, a researcher at Indian Bank, for example, ICICI Bank, wants to know if average job satisfaction of employee in Rajkot branch is different from the Ahmedabad branch. Correct. So he just want to check the satisfaction, average satisfaction. Correct. So क्या होगा, किसके बीच में उसको चॉइस करना है, आइदर राजकोट और अहमदाबाद. सो वो क्या करेगा, उसका नल हाइपोथेसिस क्या करेगा, उसका नल हाइपोथेसिस वो लिखेगा कि भाई there is no significant difference in job satisfaction of employees in Rajkot branch or in Ahmedabad branch. He will write that way only. Fine. तो उसका जो भी रिजल्ट आया, अब रिजल्ट क्या होगा, सपोज नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, so what you will need write to, what you will write, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो आप ऐसा लिखोगे कि यस देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस. कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वो नहीं बोल रहा है, क्या हो रहा है, वेदर इट इज डिफरेंट और नॉट. तो आप ये कर रहे हो कि देयर इज अ डिफरेंस और नॉट, दैट इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट. तो पता चल गया टू टेल टेस्ट क्या होता है. वन टेल टेस्ट क्या होता है, वन टेल टेस्ट इज यूज्ड व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक प्रेडिक्शन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्ट. You specifically looking at increase or decrease, more or less. Correct. There are two type of one tail test. Right tail test means ज्यादा वाला, greater than, and another is left tail test means less than वाला. Correct. So right tail test, when to use, when your alternate hypothesis uses is greater than sign. जब आपका alternate hypothesis कौन सा sign यूज कर रहा है, greater than वाला sign यूज हो रहा है. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली, एंड फॉर एग्जांपल इंडियन कॉमर्स का एग्जांपल लेते हैं. सिनेरियो देख, स्टार्टअप लाइक जोमेटो लॉन्चेस अ न्यू गोल्ड मेंबरशिप. फॉर एग्जांपल गोल्ड मेंबरशिप प्रोग्राम जोमेटो ने लॉन्च किया. उसने ऐसा सोचा दैट बिलीव दैट इट विल इंक्रीज एवरेज मंथली ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर. ऐसा वो मान के चल रहा है कि वो दैट विल इंक्रीज द एवरेज मंथली ऑर्डर. हम क्या कर रहे हैं, जोमेटो वाले ने गोल्ड मेंबरशिप, आपने शायद जो जोमेटो यूज कर रहे होंगे, दे आर अवेयर दैट दे हैव द गोल्ड मेंबरशिप प्रोग्राम. सो व्हाट दे आर थिंकिंग दैट whoever is opting for gold membership, that person will use more frequent, that they will use or they will order more frequently on Zomato as compared to normal customer. Correct. So here is greater than, that means it's a right tail test. What they are want to know, greater than, what they are going to check, greater than. Fine. So that is called a right tail test. So null hypothesis, average order value is
greater than the old average value. Fine. So इसमें null hypothesis क्या होगा? Null hypothesis again वही होगा कि average order value less than or equal to old average value. कि हम null hypothesis में तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि there is no change, nothing, कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे ही मानते हैं हम null hypothesis में कि भाई ओल्ड ऑर्डर वैल्यू और न्यू ऑर्डर वैल्यू के बीच में कोई चेंज ऐसा है नहीं. और उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्या बनेगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस के एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन गोल्ड मेंबरशिप इज ग्रेटर देन ओल्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू. राइट. सो व्हाई इट्स राइट एज कंपनी ओनली केयर फॉर न्यू प्रोग्राम मेक्स थिंग्स बेटर, इंक्रीज द वैल्यू. सो इसमें क्या होता है? आपको क्या चेक करना है? आपको ये सिर्फ ये चेक करना है कि ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हुई या नहीं हुई. ठीक है. तो आप क्या करते हो? इसको दैट इज कॉल्ड अ राइट टेल्ड टेस्ट. ओके. देन अगेन अ लेफ्ट टेल टेस्ट. लेफ्ट टेल टेस्ट व्हेन योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस यूजेस लेस देन साइन. लेस देन साइन. ओके. फॉर एग्जांपल, एचआर मैनेजर एट Infosys or any other company introduce a stress management workshop. वो क्या करते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दे प्रिडिक्ट दैट इट विल रिड्यूस नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिक लीव per month. कि वो लोग क्या कर रहे हैं? What they are doing? They are arranging a workshop, stress management workshop, and they believe that sick leave जो वहां के एम्प्लॉय ले रहे हैं that will reduce, कम हो जाएगी. अब कम हो जाएगा मतलब क्या हुआ? लेफ्ट टेल टेस्ट. आप क्या करने वाले हो? लेफ्ट टेल टेस्ट करने वाले हो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ सिक लीव, नंबर ऑफ सिक लीव इज ग्रेटर देन प्रीवियस, ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रीवियस एवरेज. प्रीवियस एवरेज के अभी तक क्या था कि जब हमने ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्कशॉप नहीं किया था तो नंबर ऑफ सिक लीव क्या थी? ज्यादा थी. तो हमारा अल्टरनेट क्या? अल्टरनेट हम लोग क्या करेंगे? अल्टरनेट हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्कशॉप आया इसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं सिक लीव है वो कम हो गया, लेस देन हो गया. करेक्ट. सो दैट इज कॉल्ड अ लेफ्ट टेल्ड टेस्ट. लेफ्ट टेल्ड टेस्ट. ठीक है. और उसको किससे डिनोट करते हैं? उसको लेस वाले साइन से हम लोग basically denote करते हैं. So that is called two type of test, left tail test and right tail test. The test value is used in making decision about the null hypothesis. Basically हम किसको किस चीज के लिए यूज करते हैं? null hypothesis को basically टेस्ट करने के लिए करते हैं. ठीक है. ओके. सो अब ये देखो, ये डायग्राम देखो. कोई भी चीज हो उसका लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, राइट टेल टेस्ट होता है और रिजेक्शन एरिया वगैरह होता है. So test statistic, a value calculated from the sample like Z score, T score जो भी हम बोलते हैं वहां से हम लोग वैल्यू लेके आते हैं. और क्रिटिकल रीजन किसको बोलते हैं? There is no graph there, the area on the graph where if your test statistic fall you reject the null hypothesis. कि आपको कहां पे आएगा? सो ये आपको डार्क एरिया दिख रहा है, 0.025 ऑफ एरिया, 0.025 ऑफ एरिया दोनों साइड पे, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड पे दिख रहा है. अगर आपका आंसर, अगर आपका लेवल यहां कहीं पे आता है, यहां कहीं पे आता है, तो आप क्या करोगे? आप कर दोगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट. है ना. आप क्या करोगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे. है ना. और आपका 95% कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो हो जाएगा आपका एक्सेप्ट रीजन हो जाएगा. ठीक है. वो क्या बन जाएगा? आपका एक्सेप्ट रीजन. तो आपका फॉल क्या करना चाहिए? आपका फॉल करना चाहिए रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ द सैंपल मीन फॉल इन आइदर ऑफ दिस रीजन, इस साइड या इस साइड. तो आपको देखा, आप कभी भी पी वैल्यू का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये क्या होता है? देखो इस साइड का कितना 0.25% और इस साइड का कितना 0.25%. ठीक है. मतलब 2.5% यहाँ पे, 2.5% वहां पे. तो टोटल कॉन्फिडेंस कितने का हो गया? सिग्निफिकेंस लेवल कितने का हो गया? 5% का सिग्निफिकेंस लेवल हो गया. ठीक. हम राइट कैसे करते हैं? हम करते हैं 0.025% फ्रॉम राइट साइड एंड 0.05% ऑन द लेफ्ट साइड. ऑल टुगेदर इट इज 0.05. तो अगर आपका आंसर, किसका आंसर? अगर आपका आंसर जो भी टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, अगर उसकी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है, पी वैल्यू है, अगर वो 0.05 से कम रहती है, कम रहती का मतलब आप कहां पे फॉल करोगे? आप ये जो डार्क एरिया वहां पे फॉल करोगे. वहां पे अगर आप फॉल करोगे, ठीक है, तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा. या फिर आप इस तरीके से रखोगे रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. है ना. तो रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस मतलब
क्या हुआ, आप जो कहना चाहते थे वो सही है, आप जो रिसर्च करना चाहते थे वो सही निकला, जो आप सोच रहे थे वो सही है कि ये इससे कम होता है, इससे ज्यादा होता है, इसका असर पड़ता है, इसका असर नहीं पड़ता, जो अभी आप कह रहे थे वो सही हुआ, करेक्ट। सो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन एरिया इन द केस टू टेल टेस्ट विथ 5% सिग्निफिकेंस लेवल, तो दोनों तरफ 2.5% है, करेक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, 0.025% इस तरफ, 0.25% उस तरफ, और 95 का जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट इज अ सेंटर एरिया। और अगर आपका आंसर इस 95% के एरिया में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट टू फेल नल हाइपोथेसिस, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिजेक्ट टू फेल नल हाइपोथेसिस। क्लियर, दिस वे यू नीड टू राइट, ओके। सो तो इसका जो क्रिटिकल रीजन होता है, जो क्रिटिकल रिजेक्शन, और वी कैन से रिजेक्शन रीजन, वो कौन होते हैं, ये जो डार्क साइड के एरिया होते हैं वो होते हैं द एरिया ऑन द ग्राफ वेयर इफ योर टेस्ट स्टेटिस्टिकल फॉल यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, and significance level, that is what we are called it as alpha. The risk you are willing to take of being wrong is common choice of 5%, ये दोनों जो इधर इधर उधर के गए 5%, और कभी कभी तो क्या होता है मेडिकल के फील्ड में 1% भी होता है। हम तो चलो कॉमर्स वगैरह वाले हैं तो हम लोग तो 5% ले लेते हैं, बाकी मेडिकल में तो और ज्यादा होता है, मेडिकल में और आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपका जो कॉन्फिडेंस एरिया होता है 99% भी जा सकता है, और आपका जो रिजेक्शन एरिया होता है और कम हो जाता है। अच्छा, इसको कैसे करते हैं, इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक मोर सैंपल, जितना ज्यादा आप सैंपल लोगे, जितना ज्यादा आप सैंपल लेते जाओगे, उतना आपका स्टेटिस्टिकल टूल्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। सो सिग्निफिकेंट लेवल डिनोटेड एज अल्फा, सिग्निफिकेंट लेवल is the probability that the test statistical will fall in critical region when null hypothesis is actually true। तो अगर आपका significance level denoted as A जो 95% का एरिया है उधर आपका अगर फॉल हो गया, so you have to accept what you have to accept null hypothesis, ये जो आपको दिख रहा है 95% का, अगर इसमें आया तो what you need to do is you need to accept null hypothesis। अगर आप सभी बच्चे, सभी जो पीएचडी कर रहे होते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू फॉल देयर कंक्लूजन विद इन दिस टू टेल, ये जो दो टेल है डार्क में है, वहां पे आप फॉल करना चाहते हो, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप ये प्रूव कर सको कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है। उसको लिखोगे कैसे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट होगा तो कैसे लिखते हैं, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। याद रखना कि हम क्या लिख रहे हैं, लिखना कैसे है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, करेक्ट, इस तरीके से लिखा जाता है हमेशा, ओके। सो क्या होगा, कॉमन चॉइस ऑफ व्हाट वी कैन से, सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%, 1%, 10% डिपेंड। हम लोग का बेसिकली, हम लोगों का जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो हमेशा 5% होता है, 5% होता है, फाइन। मेडिकल में और कम हो जाता है, और आपको इससे भी कम रखना है तो 10% भी आप रख सकते हो, पर हम लोग के रिसर्च में हम लोग 10% जैसा सिग्निफिकेंस एरिया लेते नहीं, काफी छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ क्या आता है, इसी के साथ आपकी आती है क्रिटिकल वैल्यू, जिसको हम लोग अगेन सिग्निफिकेंस लेवल में जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, अ क्रिटिकल वैल्यू इज एनी वैल्यू दैट सेपरेट द क्रिटिकल रीजन वेयर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब कौन सी, वो डार्क वाली, जो साइड बाय साइड जो डार्क वाली गई है, दैट इज अ क्रिटिकल वैल्यू। सो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू किसको बोलते हैं, ये दोनों डार्क रीजन आर द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक that do not lead to rejection of null hypothesis. The critical value depend on the nature of null hypothesis, that sample distribution that applies and significance level you have choose। तो आप क्या करोगे, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस लेवल यूज करोगे, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ाते जाओगे, उतना उतना कम आपको क्रिटिकल एरिया मिलेगा। समझ गए बात। मेडिकल में ज्यादा सिग्निफिकेंस हम लोग यूज कर लेते हैं, हमारे में हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा कितना रखते हैं, अल्फा बेसिकली 5% रखते हैं एवरेज, है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर से वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ओके। फिर जो अभी तक हम बात कर रहे थे, टू टेल टेस्ट की बात कर रहे थे, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, इसके बारे में हम थोड़ा
समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अभी तक हमने देख लिया ना कि राइट टेल टेस्ट किसको बोलते हैं, लेफ्ट टेल टेस्ट किसको बोलते हैं, करेक्ट। टू टेल में हमको क्या करना है, टू टेल के अंदर हम लोग को सिर्फ टू टेल मतलब आप ब्लू लाइन से आप देखोगे तो रिजेक्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस और रिजेक्ट अल्टर, बोथ द साइड यू विल गेट rejections, both the side you will get the rejections, fine. So your answer will fall between that h1, correct. So significance level, two tail test में significant level divided equally between the two tail of the critical region, लेस देन और ग्रेटर देन में, लेस देन और ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेस देन और ग्रेटर देन। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर, और ये डायरेक्शन लेस होता है, आइदर इट फॉल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड और इट फॉल्स ऑन राइट हैंड साइड, करेक्ट। सो इट डिपेंड्स, ओके। सो आर अल्टरनेट हाइपोथेसिस वुड बी ऑन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस H0 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किसी भी साइड पे वो आ सकता है, ठीक है। तो दैट कैन फॉल एट एनी ऑफ द पॉइंट। और राइट में क्या होगा, इट गोज ऑन द राइट हैंड साइड ओनली, राइट हैंड साइड ही जाएगा, करेक्ट। सो इट इज ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड, अगर इफ इट इज अ ग्रेटर देन, इफ इट इज अ वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन सो एंड सो ऑन, कि हम लोग ऐसा बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन दिस, मोर देन दिस, हाँ, वेजेस ज्यादा है ना। तो इफ इट इज अ राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड कि भाई सिकनेस कम हो जाती है ना, बीमार कम पड़ जाते हैं हम लोग अगर उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेस्ट ट्रेनिंग देते हैं, तो दैट विल अ लेफ्ट टेल टेस्ट, तो उसका रिजेक्शन का आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का उसका रिजेक्शन आना चाहिए, ओके। सो दिस वे यू नीड टू राइट, फाइन। तो इसका क्रिटिकल वैल्यू कितना आता है, उसमें देखा था 0.05% क्रिटिकल वैल्यू आता है। देखो फिर से मैं आपको वहीं पे ले जाता हूँ और आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्फिडेंस रीजन है 95% का, है ना, हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 95% है। और क्या है, हमारे दो क्रिटिकल एरिया हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिटिकल एरिया, एक राइट हैंड साइड पे क्रिटिकल एरिया है, करेक्ट। अगर हमको हमारा क्या बोलते हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करवाना है, मतलब जो हम कहना चाहते हैं मतलब जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, तो आपका वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, 0.05 से नीचे आनी चाहिए। किससे नीचे आनी चाहिए, 0.05 से नीचे आनी चाहिए। तो आपकी जो पी वैल्यू होती है, पी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.05 से नीचे, हमें कम आनी चाहिए, ठीक है। सो p value or we can say probability value of getting a value of test statistic that is at least extreme as one representing sample data, assuming the null hypothesis is true. The null hypothesis is rejected if p value is less than very small 0.05 or less, correct. So क्या होगा, the rejection area is split between both the end curve, राइट हैंड साइड पे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड का रिजेक्शन आएगा, बराबर है। और उसके बाद क्या आएगा, पी वैल्यू आएगी। पी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.05 से हमेशा कम की होनी चाहिए, 0.05 से हमेशा कम होगी। सो पी वैल्यू इज अ प्रोबेबिलिटी दैट योर सैंपल रिजल्ट हैपेंड बाय प्योर चांस अज्यूमिंग H0 इज ट्रू। हम क्या मानते हैं, हम स्टार्टिंग में ऐसा मानते हैं कि H0 ट्रू है। H0 क्या होता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो, जो हम चालू करते हैं देयर इज नो से, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बेसिकली नल हाइपोथेसिस होता है। और हम ये अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है। हमको क्या कराना पड़ता है, उसको उस दो जो छेड़े होते हैं, आइदर इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वी नीड टू गेट दिस वैल्यू below 0.05% to accept our alternate hypothesis, correct. So decision rule, what is decision rule, decision rule is simple. If p value is very small, means less than 0.05, you reject null hypothesis. If it is below 0.05, you need to reject null hypothesis, correct. And easy logic, if p value is low, null must go. अगर मान लो फॉर एग्जांपल p वैल्यू क्या हो गई, अगर इफ इट इज लेस देन और वी कैन से ग्रेटर देन 0.05, देन वी हैव टू एक्सेप्ट द नल hypothesis, okay. So let's see again that particular diagram, this one, okay. So if alternate hypothesis contain two non-equal to symbol,
नॉट इक्वल टू हाइपोथेसिस टेस्ट इज टू टेल टेस्ट। जैसा मैंने बताया, हम लोग बेसिकली हमारे एरिया में हम लोग बेसिकली टू टेल टेस्ट ही कर रहे होते हैं। इन अ टू टेल टेस्ट ईच टेल हैज अ एरिया ऑफ 1/2p, 1/2p का एरिया होता है। एग्जैक्टली सेंटर ऑफ दैट एरिया is known as zero. That value is completely zero. So both the side, p is twice the area of left side of the negative test statistic and p the twice area of right of the positive statistic. So both the area is divided equally. Both the area is divided equally. And if you want to accept your alternate hypothesis, then your value should fall between these two tail. ये tail के ये either on the left hand side tail or on right hand side test. For example, आपका आंसर आता है -0.002. That means it will come on left hand side, fine. And your alternate hypothesis will accept. What you will write? You will write reject null hypothesis, correct? और आपकी वैल्यू है 0.002, for example, then it is on positive side, right hand side, correct? And again your null hypothesis is rejected and alternate hypothesis is accepted. So you need to write on this way, correct? Or what will happen to right tail test and left tail test? So if it is a right tail test, then your answer should come on right hand side. Means आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? It should always be a positive value, correct? So if it is a positive value, then it's a right tail test, correct? So your answer would fall on this particular area, which is on the gray side, on right hand side. And you will write a symbol greater than. तो आप जब भी इसका हाइपोथेसिस लिखोगे तो हाइपोथेसिस के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन और मोर देन, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। आपका जो भी सेंटेंस फॉर्म होगा दैट वुड बी ऑन ग्रेटर देन और मोर, लाइकवाइज, फाइन। के पर्टिकुलर ट्रेनिंग देने के बाद क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब इंक्रीजेस। सो उसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा? कि नल हाइपोथेसिस होगा कि देयर इज नो इंक्रीज, there is no increase in the productivity of employee after providing him a 6 month training, correct? So that is a null hypothesis कि भाई 6 महीने की ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होता, ऐसा हो गया null hypothesis, फाइन। सो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको, अगर हम चाहते हैं कि ये प्रूव हो जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए पॉजिटिवली, पॉजिटिव 0.05 से नीचे, पॉजिटिवली 0.05 से नीचे अगर आपका आंसर आता है, दैट मीन्स योर null hypothesis would get rejected. तो हमारा क्या होगा? There is an increase in productivity of employee after providing him a 6 month training. ये होगा your right tail test. तो आपको वो उसके null hypothesis में भी लिखना पड़ेगा उस तरीके से। Then again left tail test. Left tail test में for example, if we provide a stress management training to the employee, then sick leave decreases. So उसका हाइपोथेसिस हम कैसे लिखेंगे? नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्रीजेस इन एब्सेंटिज्म और इन सिक लीव आफ्टर प्रोवाइडिंग हिम अ स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सिक लीव आफ्टर प्रोवाइडिंग हिम अ स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए -0.05 से नीचे फॉल करेगा, दैट वुड कम on left hand side, left hand side. So it's a left tail test. So left tail test में हमेशा less than, degrees, minus, ऐसा सब कुछ आएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? प्लस में आता है हमेशा, दैट कम्स ऑन द पॉजिटिव साइड, फाइन। सो लाइकवाइज, सो डिसीजन मेकिंग क्या होगा आपका? डिसीजन मेकिंग, वी ऑलवेज टेस्ट द null hypothesis, fine, null hypothesis. The initial conclusion will always be done on the following: reject the null hypothesis or fail to reject null hypothesis. आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हमेशा होगा either reject the null hypothesis or fail to reject null hypothesis. Traditionally, if the test statistic is critical region,
you need to reject the null hypothesis. वो जो बीच में अगर आ गया, वो है ना, बीच में अगर फॉल कर गया 95% सिग्निफिकेंस वैल्यू के बीच में फॉल किया, मींस वैल्यू वाइज if it is more than 0.05, then your alternate hypothesis will reject, and what we will write, we will write fail to reject null hypothesis, ऐसा हम लोग लिखेंगे. करेक्ट, इस तरीके से लिखा जाता है. ओके, so reject H0 means null hypothesis if the test statistical fall within the critical regions. So अगर वो 95% के critical region में fall करता है, if it does fall between that region, or we can say in the region of significance value, then null hypothesis is within the within the critical region. That means we will reject the null hypothesis. दोनों छेड़ों में अगर कहीं अगर फॉल करता है तो if it falls between these two critical region, means हमारे significance area में फॉल करता है, then we are failed to reject the null hypothesis, right? So if the test statistical does not fall within the critical regions, अगर वो critical region में fall नहीं करता, कहाँ fall करता है, significance value region में fall करता है, तो correct. Then decision criteria क्या होता है? Decision criteria will denoted with the will do the rejection. So P0 means null hypothesis will be reject only when your alpha is significance level such as 0.05. So your value, if it is equal to or greater than equal to or sorry less than 0.05%, then you will reject null hypothesis. Means क्या है, p value कम होनी चाहिए and your significance level should be greater. Significance level should be greater and your p value is less. So p value कब less मानी जाती है? When it is below 0.05%. Either it is 0.5% or below 0.05%. Either it is 0.05% or below 0.05%. If it is above 0.05%, then you have to accept null hypothesis. At that time, your p value is greater than the level of significance, alpha value. Fine, it will be greater than the alpha value. So नटसेल में क्या बात हुई? नटसेल में बात हुई कि हम हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट करते हैं, कब रिजेक्ट करते हैं. इफ योर p value, or we can say significance value, is equal to or less than 0.05%, you have to reject the null hypothesis. Number one, that means accept the alternate hypothesis. Number two, if your answer is more than 0.05%, plus or minus whatever it is, if it is 0.05% and more, correct, then what you need to do is you need to accept alternate hypothesis, because your significance value is less and your p value is more. Okay, so again, confidence of interval is basically confidence of interval is a statistical tool to estimate a range of value within which a popular parameter like average is likely to fall. Correct. Instead of giving just one single number, or we can say point estimate, we provide a range of interval, because we are never 100% certain about our sample data. Correct. होता क्या है, if you collect any kind of data, you are not 100% sure about the purity of your data. There are some sort of lacking of confidence. तो जैसे मैंने डेटा कलेक्ट किया और मैं बोलता हूँ कि आई एम 95% श्योर अबाउट माय डेटा, तो शायद माय कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%, करेक्ट. So but nobody is 100% certain about their data. It tells how much breathing room और अनसर्टेनिटी देयर इन आवर एस्टिमेट, कि हम कितना परसेंट डाउट खा रहे हैं. तो हम बोलते हैं कि हम 5% डाउट खा रहे हैं, समझे, हम 1% डाउट खा रहे हैं. तो ये होता है बेसिकली. सो दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, सो दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल को बेसिकली कैसे करते हैं, सैंपल मीन
प्लस और माइनस मार्जिन ऑफ एरर, करेक्ट। इससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को। सो सैंपल मीन्स द एवरेज यू कैलकुलेट फ्रॉम योर सैंपल डेटा, average, how you calculate the average of your sample is known as sample mean plus or minus whatever margin of error। आपको क्या कहना है, margin error plus minus कर देना, the plus minus amount that account for potential sampling error। आप sampling error उससे कम ज्यादा करते हो, that is called margin of error। But you will get the confidence interval, ठीक है। so you will get the confidence interval from this। now for example, average order value, for example, imagine you are a relationship manager at Zepto for example, an Indian quick commerce startup। Zepto आप सबने नाम सुना होगा शायद। you want to know the average amount of customer in say suppose Ahmedabad स्पेंड पर ऑर्डर के भाई जेप्टो में, जेप्टो सपोज जेप्टो ले लो या ब्लिंकिट ले लो, कि पर ऑर्डर में एवरेज कितना, पर ऑर्डर में एवरेज कितने रुपए का ऑर्डर देता है कोई, है आप ऐसा कुछ रिसर्च कर रहे हो कि पर ऑर्डर में कितने का एवरेज ऑर्डर होता है। सो पॉइंट द पॉइंट एस्टिमेशन क्या होगा, द पॉइंट एस्टिमेट वुड बी you survey 1000 order and find the average 450। आपने क्या किया, आपने सभी जो लोग ब्लिंकिट या जेप्टो यूज करते हैं, आपने सबका डेटा मंगाया और सबको पूछा कि आप कितना स्पेंड करते हो, एवरेज कितना स्पेंड करते हो, ऐसा उसको पूछा। सबने बोला कि मैं I'll spend 1000, I'll spend 200, I'll spend for, ऐसा करके मैंने क्या किया, सभी के पास से डेटा मंगवाया। और मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 लोगों से डेटा मंगाया, आई हैव कलेक्टेड अ डेटा फ्रॉम 1000 ऑर्डर एंड 1000 में मैंने टोटल उसका एवरेज आउट किया और उसका एवरेज निकालने की कोशिश की कि एवरेज कितने का ऑर्डर कोई भी बंदा करता है। तो आई केम टू नो दैट 450 रुपीज इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, करेक्ट, पर ऑर्डर। सो द कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा हाउएवर यू नो दिस माइट वेरी। अब आपको एक्चुअल में तो पता है कि अगर अभी तो आपने कितने लोगों से पूछा, खाली 1000 लोगों से पूछा, पर अगर आप मान लो अहमदाबाद में सभी लोगों से पूछोगे कि भाई आप क्या बोलते हैं ब्लिंकिट पे कितना खर्च करते हो, जेप्टो पे कितना खर्च करते हो, तो आपको अच्छे से पता है कि जो 450 रुपए का एवरेज आया है ना, वो या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वट एवर, करेक्ट। So you know either that may be below 450 average spending or it may be above 450 average spending। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे को अगर क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ एरर निकालनी पड़ेगी, मतलब प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या था, हाउ एवर यू नो दिस माइट वेरी, आफ्टर कैलकुलेशन यू फाइंड आउट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो आपने क्या किया, 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल लगाया कि भाई मैं 95% श्योर हूं, करेक्ट। सो वी डोंट जस्ट से एवरी कस्टमर स्पेंड एग्जैक्टली 450, हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे, वी से वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट ट्रू एवरेज स्पेंडिंग ऑफ ऑल Blinkit or Zepto user in Ahmedabad lies between 430 and 470। तो मैंने क्या किया, 20 का क्या कर दिया, 20 का मैंने मार्जिन एरर लगा दिया, है ना, 20 का मार्जिन एरर कि भाई 430 या 470, है ना। मेरा एवरेज तो क्या निकला था, मेरा एवरेज निकला था 450। सो मैंने क्या किया, मार्जिन एरर लगाया और कॉन्फिडेंस इंटरवल को लिया 430 एंड 470 के बीच में, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी केम टू नो व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो हम लोग लेते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, वी केम टू दिस वे। हम अगर 100% श्योर हो जाएंगे, अगर हम लोग 95% नहीं लेते और हम लोग 100% श्योर लेते हैं, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा पता है, वी हैव टू से दैट exactly people are spending exactly 450 rupees each order एवरेजली ये होगा। पर हमको अच्छे से पता, अगर हम सबको पूछेंगे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अगर पूछेंगे, तो ये कभी भी सच नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा माइनस में जाते हैं, थोड़ा प्लस में जाते हैं, और उसको ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आई होप दिस इज क्लियर।
सो कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजुअली हम लोग बेसिकली कितना लेते हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं। मेडिकल के अंदर और श्योर होना पड़ता है, तो मेडिकल में कई बार 99% तक भी जा सकते हैं, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। बेसिकली 95 इज वेल एक्सेप्टेड रेंज। So 95% level means if we repeat the study 100 times, 95% का मतलब क्या होता है, अगर हम 100 times स्टडी को रिपीट करेंगे, बार बार 1000 लोगों से we are going to ask, then 95 of those times our interval would capture the true population average every time. with with the interval, narrow the interval. For example, हम लोग क्या कर सकते हैं, if you want to get the हाईएस्ट प्रिसीजन, अब यहां पर खेल आता है डेटा का पूरा डेटा का। अभी तक हमने कितने का सैंपल लिया, 1000, वी हैव टेकन जस्ट 1000 सैंपल। और 1000 सैंपल में हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई 450 एवरेज आता है, 450 रुपया एवरेज आता है, तो 20 यहां से कम किया, 20 वहां से बढ़ाया, तो हमने बोला कि लगभग कितना खर्च करते हैं, 430 से लेके 470 रुपीज तक खर्च करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 1000 ही सैंपल लिए। अब मान लो मैं सैंपल लेता हूं 10,000 सैंपल लेता हूं और उसके बावजूद आंसर निकल के आता है 450। अब मेरे को पता है कि मैंने सैंपल साइज बहुत बढ़ा दिया और उसके बावजूद 450 आ रहा है। तो अब मेरे को मेरा जो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, इसको घटा सकता हूं मैं, मेरे पास घटाने का चांस आ गया। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 430 से लेके 470 के बीच में यूज करता है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लोग 445 रुपीज से लेकर 455 रुपीज के बीच में लेते हैं। ये कब मैंने कहा, जब मैंने अपने सैंपल साइज को बढ़ाया। अब इसका जस्ट अपोजिट ले लो, जस्ट अपोजिट। अगर मैंने सैंपल साइज कम कर दिया, मैंने सैंपल साइज कितना ले लिया, मैंने सिंपल साइज लिया 100, खाली 100 लोगों को पूछा, सैंपल साइज 100 लूंगा, तो मेरे को क्या बढ़ा देना पड़ेगा, मेरे को बढ़ा देना पड़ेगा मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा 300 से 600 रुपए के बीच में यूज होता है ना। तो अब मैंने क्या किया, सीधा 150 का आगे पीछे ले लिया। मैंने यहाँ से 150 कम लिया मतलब 300 पकड़ा, वहां से 150 बढ़ाया मतलब 600 पकड़ा। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हो गया, कम हो गया, करेक्ट। सो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा, जितना ज्यादा आप सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा और उतना ही अच्छा आपका प्रिसीजन होगा और उतना ही अच्छा आपका डेटा सेट निकल के बाहर आएगा। इसके लिए क्या होता है, your guide is always asking for more and more data collection, correct. There is a mathematical tool also, how much data we need to collect, उसका statistical tool है। आप कभी नेट पे सर्च करना, आपको मिलेगा how much you need to collect the data from your study। हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, how much data we need to collect। so सैंपल कितना होना चाहिए, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, उससे आपको सैंपल मिल जाता है, करेक्ट। बट if you want to be more sure, increase your sample size। जितना ज्यादा आप सैंपल लेते जाओगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होता जाएगा और जितना कम होता जाएगा उतना अच्छा माना जाता है। 450 एवरेज निकला तो मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कर दिया, 455 से लेके 445 से लेके 455 अकॉर्डिंगली वी हैव। सो I am more confident on my data. So confidence interval plays a very crucial role that likewise, correct। उसके बाद आते हैं आपका, फटाफट हम लोग खत्म करते हैं, मार्जिन ऑफ एरर, करेक्ट। मार्जिन ऑफ एरर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, करेक्ट। सो व्हाट इज टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बेसिकली। सो type 1 error is mistake of rejecting the null hypothesis when actually your null hypothesis is true, that symbolized as alpha, this occurs when you reject null hypothesis even though it is actually true। आपका आपने क्या बोलते हैं, आपने टेस्ट अप्लाई किया और उसके बाद आपका जो भी आंसर आया उसमें आपको क्या लगा, आपने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, जबकि एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, नल हाइपोथेसिस को एक्चुअल में एक्सेप्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसके वजह से आप एक डायलेमा में फंस गए कि एक्चुअल में तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट मैंने कर दिया, एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस को मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, उसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर बोलते हैं। और जस्ट व्हाट इज टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर अगेन जब आपको द ऑकर व्हेन फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना, जब आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए था और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, जस्ट अपोजिट।
जस्ट अपोजिट। तो उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। ठीक, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा। सो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है व्हेन यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो, जबकि आपको किसको एक्सेप्ट करना चाहिए था? आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था नल हाइपोथेसिस को। तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर को क्या करेंगे? जब आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए था, जबकि आपने किसको एक्सेप्ट कर लिया? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको बोलेंगे टाइप 2 एरर। फाइन, तो उसको बोलेंगे टाइप 2 एरर। समझ में आई बात? बट रिमेंबर, हम लोग लिखते कैसे? मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, लिखते कैसे? Reject null hypothesis and fail to reject null hypothesis. Likewise, you need to write, correct? So this is the way of writing. So what is happening when type 1 error and type 2 error? When you accept null hypothesis, so you have to accept null hypothesis, but unfortunately, however you process the data, wrong tool you have used, or wrong methodology you have used, wrong data you have collected, and beside accepting null hypothesis, you have rejected null hypothesis. That means you are doing type 2 error. And when we need to reject the null hypothesis, you are accepting the null hypothesis. Again, due to data, due to wrong method, due to wrong tool, correct? You have to reject the null hypothesis, but somehow you have accepted it. So it is a type 1 error, correct? So for example, imagine Amul has a machine that packs butter. The null hypothesis is that each pack contain exactly 500 gram. 500. अभी इसमें क्या हो रहा है? Type 1 error. The quality inspector reject the batches claiming this is underweight, but in reality the batch was perfectly fine with 500 gram exactly. क्या हुआ? हमने किसी कंट्री में या किसी सप्लायर को माल भेजा और उसने हमको माल रिटर्न कर दिया ये बोलते हुए कि भाई इसका वजन प्रॉपर नहीं है, जबकि हमने देखा तो वजन प्रॉपर था। करेक्ट है, वजन प्रॉपर था। सो व्हाट इज इट? इट इज अ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर, everything was perfect, everything was aligned, but they have rejected it. Second thing, the inspector accepted the batch thinking it is 500 gram, but actually it is underweight. और जब हम कम अंडरवेट वाला पैकेट भेज रहे थे तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। करेक्ट। फॉर अनदर एग्जांपल, टीसीएस इंटरव्यू लेती है, टीसीएस इंटरव्यू लेती है फॉर अ कैंडिडेट। सो नल हाइपोथेसिस is that candidate is not qualified for the job. For example, it is not qualified. So null hypothesis type 1 error क्या होगी? The company hire a candidate, but the person is actually incompatible. बंदा बराबर नहीं था तो भी आपने उसको हायर कर लिया। So that is a type 1 error. And type 2 error, the company reject the candidate, but that person was actually a perfect person, a good programmer, a brilliant programmer, but company has rejected him. That is type 2 error. जैसे कि हम लोग होता है ना, इंटरव्यू में बैठते हैं पर हम लोग बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं बट हम रिजेक्ट हो जाते हैं। दैट इज अ टाइप 2 एरर। करेक्ट। सो लाइकवाइज, or so this is all about type 1 error and type 2 error. For any fixed alpha and increase the sample size and will cause decrease in beta. For fixing the sample size, a decrease in alpha will cause an increase in beta. Conversely, increase in alpha will cause the effect. So uh, according according to this inverse relationship, you will find if you try to decrease the chance of type 1 error by being very strict, you automatically increase the chance of type 2 error. करेक्ट। इसका मतलब ये होता है। सॉल्यूशन क्या है? The only way to decrease both the error at the same time, increase your sample size. This is the nutshell of anything. A large sample gives the more accurate picture of the true position. कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, ultimately what you need to do is you need to increase your sample size. Exactly for this reason, each and every guide in research, each and every guide in any journey, they will always emphasize on to increase the sample size. Always, वो हमेशा आपको क्या बोलेंगे? Increase the sample size. They will always behind you to increase the sample size. Correct.
both to decrease both A and B, increase the sample size. अब पूरे उसका बेसिक सार क्या है? बेसिक सार ये है that you need to increase your sample size. Fine. So the following 5 steps follow the testing hypothesis. Specify your alternate null hypothesis and alternate hypothesis. The null hypothesis and alternate hypothesis and acceptance level of alphabet, acceptable level of A. Determine the appropriate sample based on test statistical and rejection reason by specified your H0. Collect the sample data and calculate the test statistic. Make decision either reject or fail to reject. Interpret the result in common language. Correct. Or these are the tips and tools. Correct. So you don't say yes or no. You just say there is sufficient evidence to decide the claim is false or there is not sufficient evidence. Correct. तो हमारा दो तीन पॉइंट हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. We are here as a researcher just to say this is just to say that the sufficient evidence indicate the claim is false or not. हम सिर्फ ये बताएंगे either hypothesis is rejected or not able to rejected, means either your null hypothesis is rejected or fail to reject. We are here to tell you just these things. उससे ज्यादा कुछ नहीं हम बोलेंगे. There is sufficient evidence to conclude that new incentives scheme significantly involve the sales performance in the South Indian regions or West better or East better. हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ क्या बोलेंगे, is there any difference or if there is any difference or not. Correct. So in hypothesis testing, we are here to say that our result, how much in which area results false, either our null hypothesis is rejected or we are failed to reject the null hypothesis. Accordingly we'll pretend. So for good understanding or for good hypothesis testing, two things important, two things is very important. First, increase your sample size. Second, apply a correct statistical test. That is the things you can do. Correct. S0 claim, a cigarette manufacturer claim that less than 1/8 of US adult population smoke cigarette. So if H0 is rejected, you should conclude there is significant evidence to indicate that manufacturer claim is false. We are here to say just these things. How much claim is false, how much claim is true, we are not here to say this. What you will say? You will say either claim is false or not. If you fail to reject the null hypothesis, you conclude there is a not significant evidence to indicate that manufacturer claim is true or not. Just we are interpreting this way. Fine. How much they are true, how much they are not true, we are not supposed to do all these things. Correct. So this is how you need to interpret the decision. Number one. Number two, to do a correct research or to do a correct hypothesis testing, your sample size would be increased, your sample size would be more. Correct. Third, you have to apply a good statistical tools for that. Fine. Thank you so much. If you have any queries, I can take them up. अगर आपका ऐसा कोई query वगैरह है तो, or we conclude our session. Okay. Hello. This session. Hello. Yeah, you are Yes, audible. sir. It seems like the students are not having any doubts, sir. We shall conclude the session. Okay. Sure, Okay. sure, sure. Thank So, you very much. thank you Thank so you much. so much. Yes. Yes, sir. Thank you Thank you. so much for such a clear and concise strong session on hypothesis formation and testing. Your explanation of how to frame hypothesis along with the difference between null and alternate hypothesis was extremely helpful for our scholars. And also the step-by-step approach you shared for testing hypothesis has given
everyone much needed clarity for conducting systematic and reliable research. Once again, on the behalf of the organizing committee and all our research scholars, we sincerely thank you, sir, for your valuable guidance and knowledge sharing. Thanks a lot, sir. Thank you so much. Yes.